स्टूडेंट, ये लेक्चर MSc प्रीवियस पेपर 4 का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारे पास वाटर एनालिसिस irrigation water always contains some soluble salts irrespectively of its sources. The suitability of water for a specific purpose depend on the type and amount of dissolved salt. Some of the dissolved salts or other constituents may be useful for crops. However, the quality and suitability of water for irrigation purposes is assessed in terms of presence of undesirable constituents, and only in limited situations is irrigation water assessed as a source of plant nutrition. Some important characteristics of irrigation water, जिसमें हमारे पास पहला है pH कि वाटर की pH कैसे होनी चाहिए, दूसरी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तीसरे आर है उनकी SAR यानी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, फिर हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ B एंड अदर एलिमेंट डेट में बी टॉक्सिक टू प्लांट, concentration of carbonate and bicarbonate as related to concentration of calcium plus Mg, referred to as residual sodium carbonate RSC जिसे हम बोलते हैं, content of anions such as chloride, sulfate and nitrate. The analytical data on the above parameter are used to describe the quality of the irrigation water drinking standard fixed to each aspect as in index. Water coming from industries as influent or domestic wastewater as sewage may contain some specific plant nutrients. These water may be useful for irrigation for field crop if assessed for toxic or pollutant, metal or organic and microbial constituents with regard to their suitability of otherwise. Determination of organic constituents in generally carried out under two categories. First है organic substance, that quantity and aggregate amount of organic C, and that second है individual or specific organic substance such as benzene है, DDT है, methane है, phenol and endosulfan. Some important determination are the chemical oxygen demand COD, which give the total carbon organic substance, and the biochemical oxygen demand BOD, which give the amount of nitrogen biodegradable organic substance in the water sample. The limits of your अब हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Generally all irrigation water with an EC of less than 2.25 mSiemen are considered suitable, except in some unusual situations. Is a very sensitive crop and highly light soil of poor permissibility. अगला हमारे पास है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR. Sodium in order to determine the sodicity of alkalinity of hazard of irrigation water, SAR का जो फॉर्मूला है Na प्लस अपॉन कैल्शियम प्लस Mg प्लस अपॉन 2, इसकी पावर है हाफ. जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इज इन किसमें आएगी,
एम ई पर लीटर में। ये जो सेफ वैल्यू होती है इसकी एस ए आर की वो लेस देन 10, मॉडरेट होती है 10 से 18 के बीच में, अनसेफ होती है 19 से 26 के बीच में, और मॉडरेट अनसेफ, और बिल्कुल अनसेफ जो होती है जो 26 से ज़्यादा। अब रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, RSC इंडेक्स इज इम्पॉर्टेंट for carbonate rich in and bicarbonate rich irrigation water. It indicates their tendency to precipitate calcium as calcium carbonate. RSC is calculated by RSC ml per liter is equal to carbonate जिस फॉर्मूला है ये हमारे पास क्या है, कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस 2 प्लस Mg प्लस 2। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बोथ केटाइन एंड एनाइन आर इन Me per liter. The sodicity hazard in term of RSC is कैटेगराइज जो सेफ वैल्यू है वो लेस देन 1 पॉइंट, वो हमारे पास 1 से 1.25, मॉडरेट है 1.25 से 2.5, अनसेफ है 2.5 से ज़्यादा। द लिमिट्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, रेनफॉल एंड क्लाइमेट कंडीशन। हायर SC वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड सेफ फॉर सैंडी सॉइल इन ए हाई rainfall area. Ratio of magnesium to calcium. It is widely reported that calcium and magnesium do not behave identically in soil system, and the Mg deteriorates soil structure, particularly where water or sodium dominated and highly saline. A high level of Mg usually promotes a higher tolerance of exchangeable sodium in irrigated soil based on the ratio of Mg to calcium. Waters are categorized as safe value जो है हमारे पास लेस देन 1.5 है, मॉडरेट है 1.5 से 3.0 है, और अनसेफ है 3.0 से ज़्यादा। बोरोन कंटेंट है हमारे पास, क्रॉप रिक्वायर्ड बी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इट बिकेम टॉक्सिक वेयर प्रेजेंट बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल इन रिलेशन टू बी। यानी बोरोन टॉक्सिसिटी वाटर क्वालिटी रेटिंग, लो हजार्ड है 1 से कम म्यूजी बोरोन पर ml, मीडियम हजार्ड है 1.1 से 2 म्यूजी, और हाई हजार्ड है 2 से 4, वेरी हाई हजार्ड होती है 4 से ज़्यादा। ईच ऑफ अबव पैरामीटर हैज़ ए बीइंग bearing on the quality of irrigation water. However, each water source will have its specific suitability of hazardous nature depending on the presence or absence of each of constituents. Different chemical constituents interact with one another and cause a complex effect on soil properties and plant growth. Water with a low SR and high EC are widely suitable. However, when a value of any one of these parameters increase in its content, the waters become less suitable for irrigation purpose. The selection of crop for such situations become critical. Salt tolerant crop can be grown in such area. Soil type is also an important consideration under such situation. In following table, 18 indicate in following table the upper permissible level of EC, SAR, RSC and boron for soil
different amount of clay for growing tolerant and semi-tolerant crop. These limits are based on extensive trials conducted by Polyval and Yadav. तो ये वो टेबल है जिसमें पर परमिसिबल लिमिट इसमें दे रखी है, जिसमें हमारे पास जो ST है ये सेमी टॉलरेंट क्रॉप है, T है टॉलरेंट क्रॉप। अब हमारे पास है ट्रेस एलिमेंट। द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस एलिमेंट और हेवी एलिमेंट रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ where concentration increase beyond a certain level in irrigation water and where such water are used continuously. However, such elements are not normally a problem in common irrigation water. They can be of concern where industrial influence water is used for irrigation. Collection of water sample. अब है a representative sample water sample is collected in glass or polyethylene bottle which should be properly washed, rinsed with the same water is being sampled. Floating debris or any other contaminants should be avoided while collecting the sample. After proper labeling, source of water है, date है of collection and type of analysis required, the sample should be sent to the laboratory without undue delay. Some of anions such as SO4 and 3 may be quite low